Morning to each and everyone. So we can see a couple of faces, those not attended yesterday, they have came. So welcome to the computer to each and everyone over here. So we are starting with the agenda number 15, Indian India member e-directory and app update. So Pramod ji is there? Pramod ji didn't come? Pramod Vyas ji didn't come? Okay, no worries. Thank you. So at COAREA AGB, we have launched the application of NIR India, Android application. Sir, shall I go there? So at COAREA AGB, we have launched the NIR India application, the Android version, and continuously redevelopment of that and upgradation of that is been going on. But we were majorly facing issues in regards of the iOS, because there was an NIR India account in App Store, but we were unable to retrieve it. So from last 3 months, we have been continuous basis. We have been struggling over there. So, Sabir bhai, though we were supposed to launch the whole version today, but just day before yesterday, the App Store account has been live. Thanks to Suman bhai. After 10 years, I think, 8 to 10 years, the App Store account NIR India is live again, and the application is live on the App Store also. But just a request to each and everyone, don't send it to your members and everywhere, because we have been testing the application initially for the App Store, and the development is going on. So you can download by yourself, but do share. We will try to, before the next GB, we will try to launch it fully, the 100% version, sir. So this was an update of that one. Sabir bhai, thank you so much for giving that opportunity to me to develop that application, because it was a flagship project of ours. We have been continuously trying from last 1 year to develop it. And just an update, yesterday Pramod Vyas sir was saying how our members will connect to each another. So Pramod ji is not there. So ma'am, Shreya ma'am, just an update on that, particularly for the networking and all. So e-directory is live. So we are been in a process with the help of Tarun sir for developing a property exchange portal also, in particular on that. So the vendor is live, everything is live. Thank you, Naresh ji. Naresh ji is supporting a lot on that particular thing. Thank you, Naresh bhai, again. So we will develop it and integrate it on a single mode, and everything will be on the NIR India app itself, each and every link. So this was an update for the NIR India app, sir. Thank you so much, sir. Oh, good morning, everyone. This is my Central Zone report. Before starting my presentation, मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम जोनल डायरेक्टर उस बिल्डिंग की नींव की तरह हैं, जो पूरी बिल्डिंग को संभाल के तो रखते हैं, लेकिन कभी दिखते नहीं हैं, कभी हाईलाइट नहीं होते हैं, और क्लैपिंग्स में भी शायद हमारा नाम कम ही आता है. बट मैं आज चाहूँगा कि आज सब जोनल डायरेक्टर के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए. सो मेंबरशिप ग्रोथ में जो हमारा टारगेट था, हमने 50% का टारगेट लिया था, जो प्रीवियस ईयर से हम अचीव करेंगे, वो हमने लास्ट क्वार्टर ही अचीव कर लिया था हमारे सेंट्रल जोन ने, जो हमारा टारगेट था. मेंबरशिप एसोसिएशन ग्रोथ का जो हमारा प्लान है 5 एसोसिएशन का, तो हमारा डिस्कशन चल रहा है भिलाई, रतलाम, जबलपुर, बिलासपुर, ग्वालियर के लिए. सो इट इज़ अंडर डिस्कशन. हमारा जो भी नेक्स्ट सेंट्रल जोन या जो भी टीम रहेगी वो इस पे एक्सिक्यूट कर सकते हैं. बिजनेस एक्सचेंज जो प्रोग्राम था रेगुलर हुआ है सेंट्रल जोन पे. इस पे सारे एसोसिएशन ने सपोर्ट किया. एजुकेशन इवेंट्स हैं जो हमने कवर किया. सोशल मीडिया पे हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया. फंड रेजिंग पे थोड़ा सा हमने लो परफॉर्म किया, जो हमको बढ़ाने की ज़रूरत है. ये फंड रेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, चाहे एसोसिएशन के लिए हो या एनएआर के लिए हो. तो
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेजर इवेंट, CSR एक्टिविटीज़, गवर्नमेंट लाइजनिंग में जैसा कि सब देख रहे हैं, गवर्नमेंट लाइजनिंग में हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा इन्वॉल्वमेंट हो। हम सिर्फ सेंट्रल की बात नहीं कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया पे जहाँ पे भी हैं हमको गवर्नमेंट लाइजनिंग ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। चाहे लोकल एसोसिएशन है तो वहाँ पे कलेक्टर हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, रेरा अथॉरिटी है, वहाँ पे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, तो इनसे रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए और इसको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट से हमारी बॉन्डिंग जितनी अच्छी रहेगी हमको अपना लाइजनिंग करना ईजी रहेगा और हमारी बातों को प्लेस करना भी बहुत ईजी हो जाएगा उसमें। सो मेरा रिक्वेस्ट है हेड टेबल से कि वो भी इस चीज़ को प्रमोट करें कि गवर्नमेंट लाइजनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं, हम लोकल स्टेट लेवल पे भी उसको आगे बढ़ाएं। CGR का जो मेंबरशिप ग्रोथ है वो कंप्लीट हुआ है। इरवा के भी मेंबर्स अच्छे हैं, 68 मेंबर्स हैं, ABR 51, VRA 46। अभी VRA का जो वो चल रहा है कि अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जो उनके ऑडिट किए हैं उसमें, तो दे आर अंडर प्रोसेस। मोस्टली ये कमिंग फाइनेंशियल ईयर में उनका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। बिजनेस इवेंट जो है हमारे एसोसिएशन CGR ने 2 किया है। एजुकेशनल इवेंट्स हैं, CSR है। CSR में हम बच्चों के साथ जो होली का है और भी कुछ है, छोटे छोटे इवेंट्स हम करते रहते हैं। इरवा, ABR, VRA, RAR, एवरीवन आर डूइंग सो मेनी इवेंट्स। थैंक यू वेरी मच। चूँकि समय 3 मिनट का ही मिला था तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। टाइम इज़ वेरी प्रीशियस एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। I will just request our East Zone Director, Mr. Robin Mitrukar, to give the presentation. Yes, I. Just a request, Chetan Bhai and Ashwin Bhai and Santosh Bhaiya to join themselves on a queue for the presentation, so that we can save the time. Please. Hello. Just after it. Chetan Bhai. Good morning, all of you. So, friends, there were some tech issues, so I'll just be briefing through my mobile. And friends, let me tell you all that we are having 6 associations in the Eastern India. That is Reka Kolkata, Area Siliguri, GRA Guwahati, JR Ranchi, DRA Durgapur, ORA Odisha. So we are having 6 associations altogether. And in the pipeline, we are having 4 associations, that is the Jorhat, Assam, Sikkim, Patna, Bihar, and Kuch Bihar in the West Bengal. So 4 associations, we are already in talk with them with the support of Bobby Bhaiya. And friends, let me tell you all that all the associations in the Eastern India are doing quite well. Reka Kolkata is having 160 members with a good growth of more than 100%. So I congratulate Bobby Bhaiya and Mahesh Bhaiya for the same. Area Siliguri is having 55 members at present, and all the programs have been, they have been doing very nicely. We are having the other associations like GRA Guwahati, which has given a 118% growth. I congratulate Sanjay ji and Vikash Goenka ji, if they are here. And Ranchi के लिए मैं बोलना चाहूँगा, if Pawan ji is here, Pawan Jaiswal ji, I don't think so he is here right now, but we need Ranchi को थोड़ा boost up करना का दरकार है अपने को, and काम अभी चल रहा है उसके ऊपर में. Durgapur, Babul Sarkar, and we are, I think Babul is also not here, but Durgapur is also working hard to come across, and Odisha, Mizazul Bhai, and Jitu Mahapatra is there. So they are doing fantastic, and they have also achieved their second GB member this time. Jitu Bhai is there. So they are having the growth of 20 members more. So all the associations are quite doing well, and we hope that in the coming time, East India will prove more themselves, and the dignity of the East will go more heights. Thank you, sir. Manish bhai, if you can join in. Manish, Chetan, I see Santosh missing there. Santosh is around? Santosh has gone out? Okay. So this is an important part for all the GB members. We made the effort of creating structured formats for zonal directors reporting this year, which is where everybody can see those charts consistently. Manish bhai, just 1 second, because this is special coming for some of you.
So, एक स्टोरी है, 9th स्टैंडर्ड में मैं पढ़ा बहुत था, पूरा साल भर बहुत पढ़ा था, पर मैंने ना फिर फाइनल एग्जाम जाके नहीं लिखा और मेरे को सब कुछ आता था. So we requested the teachers, but they did not pass me because मैंने फाइनल एग्जाम नहीं लिखा था. So even though it's the last time, I am applauding all the zonal directors who have filled in the reports and presented them on the screens for everybody to understand, and requesting all the zonal directors now and in future, let's do that, because everybody understands it thoroughly when it's on the screen and the percentage figures and the statistics are visible. When you speak like this, Robin, if you ask me whatever you spoke, if one person remembers even one statistic, I would change my name. So which is why presentation is very, very important. Manish, applauding you for doing that very, very well, and that's why I called you, and all these zonal directors who are going to do it. So, but this is where, please understand, what we tried doing is reducing the presentation time from 15 minutes to 3 minutes, 4 minutes, but making that report for each zonal director will probably take 2 hours, 3 hours. Correct? मेरे लिए इतनी तालियां कभी नहीं बजी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था. Okay, jokes apart, let's continue with the next. But seriously, zonal director reporting is a format that is reporting every association. So let's grow on it very strongly and let's take it very seriously. Thank you. Thank you. North Zone report. So total members added in from April 22 to February 33 in North Zone was 32. Member association 1 was in process, but as the head table had decided, it will be taken later on. Business exchange programs in the North Zone were done 7. Educational and training programs were done 3. Social media press releases on association and NAR India link to be shared 158. Fundraising and sponsorship, Let's Connect events were done, builder events were done, long-term membership was done. So APP is a pioneer in this. So they have done fantastically very well for their fundraising. And the best scheme which they had launched was long-term membership of 10 years. Through that, they have collected a lot of funds for their association. So 3 cheers for APP. So major events and conferences were done 10, CSR activities 6. CSR may, after giving this report, APP had conducted blood donation camp in which they had collected 55 units. And on 12th March, AOR did blood donation camp and collected 60 units. Government licensing is in process with couple of things. Tarun is very active in that from APP. 5, number of associations audited 2. APP Delhi NCR office inaugurated. So that was a big achievement by APP in Gurgaon. They have brought next stand office to NAR India. So, Registrar of Societies, APP, Delhi NCR is updated, AOR Ludhiana is updated, GST is up to date, number of members, RERA registered as 73 and 100% in Ludhiana. AOR is doing fantastically very well, every member is RERA registered. So, membership growth, APP Delhi added 21 members and AOR added 11 members. RRA Jaipur, apart from repeated messages and calls, they did not give any data throughout the year. And neither did ECRI Delhi. So this was my report. Thank you. Chetan sir. Thank you.
if you can stand in the center. You know, there are some unsung heroes. He started doing the social media in Tarun Bhai's term. We made him the joint treasurer this year. Then we added the responsibility of social media back upon him, which he has done a phenomenal job without a flaw. And we also asked him to head the North Zone. You know, 3 major responsibilities. He's handled it completely flawlessly. Absolutely, hats off, Chetan Bhai. So proud of you. And he's promised me कि आज शाम के बाद आपकी एक नहीं सुनूंगा मैं. Thank you so much, Chetan Bhai. Just request to West Zone Director Ashwin Rasane. Santosh Bhai. Our South Zone Director, Mr. Santosh Awalaki ji, please. I'll just read out my report. I've not given it here. We have 9 associations in South Zone, and we contribute the 2nd highest number of members to NAR India. Here's a brief of all the associations in my zone. First one is APPCC Chennai. Chennai is a very tight-knit association with its members doing very brisk business in Chennai. APCC is obviously, as you guys know, very instrumental in bringing out the NAR India monthly newsletter. They've been doing this very consistently and they've been doing an excellent job. I think all of us need to give them a round of applause for this. BRAI, Bangalore. BRAI again is a very active association with a very large number base. BRAI, what I like about BRAI is they conduct regular zonal meetings and they have divided the city into many zones and they conduct regular zonal meetings through which a lot of members do business amongst each other. So not only does that help business, but their members are also very tight-knit because they meet each other very regularly. Coimbatore, obviously, the hometown, we are here in Coimbatore, so I'm going to say very nice things about the host today. The chairman, of course, we have, even though Coimbatore is a pretty small association compared to the other associations, we have our president-elect from this association. And they are obviously going to be hosting the 15th annual NAR India convention, and they are calling it Narvigate, which will be held on the 18th and the 19th. We wish them the very best to Shiva and his team. Next is my home association, Confederation of Real Estate Associates India, or COAREA. COAREA contributes the largest members to NAR India by member count. We are about 310 plus members. We, of course, were the host of the 14th NAR India convention that was held in Bangalore, and it was a huge success. There was about 1,500 realtors from all over India who attended this magnus opus. We had correctly named it Yes Realtor to highlight the significant role that realtors play in the real estate ecosystem. Even though most people don't recognize it, we play a very, very important role, and we need to stand up and claim our fame under the sun till somebody else also recognizes us. And of course, the current president, Mr. Samir Arora, is also the president of COAREA Bangalore. Hyderabad Realtors Association, again, HRA is very active and it's very engaged with its members. Even though they could take in a lot more members because they have very strict guidelines and they insist that all their members are RERA registered, their numbers are around 100 plus. But they have a very rigorous, like I mentioned, they have a very rigorous screening process, and consistently they choose quality over quantity. Kerala Realtors Association, Cochin, they're active, they're very active, even though their member base is very low.
they conduct regular training programs, knowledge sessions, business exchange programs for their members, and they also have business exchange programs with other associations and their members so that a larger consumer base can be serviced by their members. They emphasize professionalism so that the members and their businesses are always on the right track right from day one. MRA, or the Mysore Realtors Association. Mysore Realtors Association just celebrated their 10th year since inception last year. I think they also had a blood donation camp to celebrate that and a family day along with that. They also conduct regular training programs, knowledge sessions, business exchange programs, and they also take their members to project sites so that they can get first-hand experience of both the project and the builder can engage with them directly. Real Estate Association of Professionals, Chennai. They are the youngest association in the NAR family, and they are hungry to make a mark. Even though they are just 2 years old, they have more than 100 plus active members and growing. In fact, they had the largest non-host contingent at NAR at the convention in Bangalore, and we wish them the very best. Of course, I know Amit, it's being led by a very dynamic Amit, and we wish you guys the very best. Can I have the 1 minute? Oh, charger. Can I put the charger somewhere? Connect the charger? Can I connect the charger to my laptop? Meanwhile, you can join TRA of the Trivandrum Realtors Association. Again, TRA is a very active association that conducts regular training programs and knowledge sessions for its members. They conduct business exchange programs also along with other associations so that their members can also engage with a large consumer base. So these are the 9. One thing I forgot to mention about Chennai is they emphasize a lot on the IREAP Chennai. They emphasize a lot on knowledge sessions, and I've been noticing that they have regular training programs, which I think is very commendable. There are 9 associations, and this is the brief of all the 9 associations in my zone. I want to thank each association, president, secretary, office bearers, and the committee members for the hard work that they put in to keep their association flags flying very high. I would also like to take this opportunity to thank all the members of all the associations who've been part of this fraternity and whom I'm very honored to represent. Proud to be a COAREA member, proud to be an NAR India member. Thank you. Thank you so much, Santosh Bhai. Hello. Guys, big round of applause for Santosh. I'll tell you for what reason. Besides being our zonal director for South, he is also the general secretary for COAREA, and my solid backbone who has allowed me the time to be devoted to NAR India and taken on a lot of load this year there. So big round of applause for Santosh. Go to the third slider directly. Sorry. Morning, guys. अच्छा लगता है अगर लेट आएंगे तो और तालियां बजेंगी थोड़ी एनर्जी बड़ी बरकरार थी एनीवे सो मॉर्निंग अगेन थोड़ी कुछ बात कर लेता हूँ उसके बाद प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ आई नो आई हैव 3 minutes राइट विकास
ओके, थैंक यू। सो जब से समीर भाई ने पोजीशन दिया है, मैंने पहला रूट मैप कर लिया था कि गुजरात से गोवा कितने एसोसिएशन कैसे ट्रैवल करने, कितने लोगों को इन्वॉल्व करना है। अगेन तो मैंने स्टार्ट किया था राजकोट से, राजकोट के बाद में मैं गांधीनगर चला गया था, गांधीनगर के बाद में ARA, उसके बाद में वडोदरा, उसके बाद में नासिक, देन कोल्हापुर, पुणे और मुंबई के कुछ एसोसिएशंस। गाइज, ये पोजीशन लेने के बाद मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि ये मैं बेयर कर पाऊँगा, बट सीरियसली थैंक यू टू ऑल एसोसिएशन मेंबर्स वेस्ट जोन के, जिन्होंने इतना परफेक्ट कोऑपरेशन दिया है। किसी बंदे ने मुझे ये बोला नहीं अश्विन भाई आज मत आना, अभी हमको टाइम नहीं है, रिपोर्ट्स हम देंगे नहीं। एवरीवन प्रॉम्प्ट, हर जगह से एवरी टाइम मुझे रिपोर्ट ऑन टाइम मिलते रहे। आज भी मुझे रिपोर्ट्स मिले हैं। सुबह थोड़ी देर पहले मैं बैठा था कुछ रिपोर्ट्स के लिए, तो ईच एंड एवरी पर्सन ने फ़ोन पिक करके मुझे बोला कि अश्विन भाई ये सब मेंशन करना है। तो मैं चाहूँगा एक बार उन सब के लिए एक बार जोर से डालिए हो जाए प्लीज़ गाइस फॉर द वेस्ट जोन। सो मैं आगे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो मैं स्टार्ट करता हूँ एसोसिएशन से। राजकोट का मेंबरशिप स्ट्रेंथ अभी जो है वो 134 है, जिन्होंने लास्ट क्वार्टर में 40 मेंबर्स ऐड किए थे। देन ARA अहमदाबाद, ये सेकंड टॉप एसोसिएशन है वेस्ट जोन में, जिनके पास 278 मेंबर्स है, जिन्होंने लास्ट क्वार्टर में 50 मेंबर्स ऐड किए थे, विच इज हाईएस्ट वन। Congratulations to Nishit and team. GRWA again it's a big success. आप सबको पता होगा कि हमने गांधीनगर में GB की थी और सबने बहुत अच्छी तरह से एंजॉय की थी। They have 78 members और उन्हें लास्ट क्वार्टर्स में 4 मेंबर्स ऐड किए थे। VRA वडोदरा, ये मेरे लिए हमेशा एक बेस्ट एग्जांपल है, स्पेशली धर्मेश एंड मीत, जिन्होंने अपने सिटी में सेकेंड एसोसिएशन प्रमोट किया था, जिसके लिए मैं हमेशा उनको कांग्रेचुलेशन कहूँगा। उनके पास अभी 71 मेंबर्स है और उसमें से उन्होंने 2 मेंबर्स लास्ट क्वार्टर में ऐड किया है। DRA आनंद, जो हमारी नरेश भाई की एसोसिएशन है जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, उनके पास 70 मेंबर्स है। दे आर ट्राइंग फॉर गेटिंग मोर मेंबर्स। ARC नासिक अगेन यूथ एसोसिएशन, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडियन इंडिया के लिए, हम लोग बहुत सालों से देखते आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने ओलंपियाड भी जीता है, उनके लिए वंस अगेन कांग्रेचुलेशन गाइस। उनके पास 97 मेंबर्स हैं एट प्रेजेंट और 7 उन्होंने लास्ट क्वार्टर्स में ऐड किए थे। स्मार्ट मुंबई, जैसा नाम है वैसे ही वो स्मार्ट है। अगेन यस्टरडे ऑल्सो उन्होंने जो एक प्रपोजल हमारे सामने रखा था SRO का, हम लोग डेफिनेटली उसके ऊपर वर्क करने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें स्मार्ट करती रहती है। प्रमोद जी का मुझे सजेशन आते हो। Ashwin, can you change the slide? Smart path. Yeah, sorry. Is it visible now? Thank you समीर भाई। उनके पास 132 मेंबर्स है, जो उन्होंने लास्ट क्वार्टर में 4 मेंबर्स ऐड किए थे। एरिया मुंबई, जहाँ से आशीष एंड चंद्रेश भाई आते हैं, अगेन दी यूथ एसोसिएशन, जिनका बहुत तगड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडिया इंडिया के लिए, आप सबको पता होगा, जिन्होंने सक्सेसफुली ओलंपियाड कंडक्ट किया था। उसके बाद में सक्सेसफुली उन्होंने दुबई ट्रिप भी प्लान की थी और अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाया था बिकॉज माई इलनेस, लेकिन अगेन चंद्र भाई इट्स अ गुड सक्सेस। या सॉरी, 180 मेन मेंबर है, मतलब कंपनीज है, और 375 एसोसिएट। ओके, मतलब टोटल 375। 375 नो प्राइमरी मेंबर्स कितना है? कंपनीज, मेन कंपनीज, मतलब मेंबर्स कंपनीज जो है 180 प्लस एसोसिएट मिला के 375। नहीं, ये प्राइमरी का लिस्ट है, ओनली प्राइमरी। एसोसिएट का हमने ऐड किया नहीं इसके अंदर। तो सर रीक में आपने एसोसिएट ऐड किया है? नो, 194 are the main members and 278 are with the associate members. नहीं, 194 is a RERA registered members. 194 RERA है। So the main members are not 278. Okay, I'll correct it, no problem. Okay, so एरिया के पास 180 मेंबर्स है। मैं एक्चुअली अच्छी बात कर रहा था, भूल गया। ओके, तो आप सबको पता होगा चंद्रेश भाई का कंट्रीब्यूशन बहुत तगड़ा है इंडिया इंडिया के लिए, और मैं हमेशा चाहता हूँ कि एरिया हमें ऐसे ही गाइडलाइन देती रही, हमारे साथ बढ़ती रहे। दे हैव 180 मेंबर्स इन द एसोसिएशंस। लास्ट क्वार्टर में उन्होंने 6 मेंबर्स ऐड किए थे। रीक एसोसिएशन जैसे उन्होंने बोले 193 मेंबर्स हैं और लास्ट क्वार्टर उन्होंने 3 मेंबर्स ऐड किए थे, राइट? ठीक है। टीए एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स कम किए उन्होंने ड्यू टू देयर वर्किंग इश्यूज़, और एट प्रेजेंट उनके पास 57 मेंबर्स है और उन्होंने 35 मेंबर्स और गेन किए हैं। और टीए के बारे में बोलना चाहूँगा, आप सबको पता होगा, जिन्होंने
क्रेडाई MCHI के साथ में एक इवेंट किया था जहाँ पे महाराष्ट्र के CM को इनवाइट किया था उन्होंने. इट वाज अ बिग सक्सेस. वो इवेंट मैंने, अमित भाई ने और गोवा के मेंबर्स ने अटेंड किया था. KDR जो NMAR जो हमारी वाइस चेयरमैन जो भी बने प्रवीण फांसी उनकी एसोसिएशन, उनके पास 52 मेंबर्स है. लास्ट क्वार्टर उन्होंने कुछ ऐड नहीं किया था. उनका रूल ऐसे है, वो ईयर के एंड में ही मेंबर्स लेते, बीच में कोई मेंबर्स इन्वॉल्व नहीं करते. KDRA की हमारी जो मेरी होम एसोसिएशन है, वी हैव 90 मेंबर्स एट प्रेजेंट एंड 4 वी हैव एडेड इन द लास्ट क्वार्टर. प्रॉप पुणे सबको पता है, मेंबरशिप क्राइटेरिया में सबसे बड़ा सक्सेस अगर किनके पास है तो वो प्रॉप पुणे के पास है. जो मेंबरशिप ड्राइव जो वो रूल करते हैं, आई गेस कोई करता होगा. और दर्शन जी, मैं लास्ट टाइम भी आपको रिक्वेस्ट की थी, मैं चाहूँगा कि आप सब अगर हो सके तो एनआर इंडिया के ईच एंड एवरी एसोसिएशन का आपका जो एक क्राइटेरिया है, आप जैसे लेते हो मेंबर्स को, आपका जो ऐप है, अगर आप वो बता देंगे तो आई गेस हम लोग और ज़्यादा नंबर से आगे बढ़ सकेंगे. एट प्रेजेंट दे हैव 126 मेंबर्स और उन्होंने लास्ट क्वार्टर में 10 मेंबर्स ऐड किए थे. KRWA जो कोल्हापुर एसोसिएशन है, उनके पास 31 मेंबर्स हैं और लास्ट क्वार्टर में उन्होंने 3 मेंबर्स ऐड किए. GAR गोवा, जिनका हाल ही में मैंने ऑडिट किया था, बहुत लंबा ऑडिट चला डिटेल बता नहीं सकता, लेकिन 3.5 घंटा हमने बैठ के ऑडिट किया है. मैं बता सकता हूँ कि उनके पास बहुत बेस्ट रिकॉर्ड उन्होंने रखा है. आई गेस मैंने किसी को देखा है इन टर्म्स ऑफ द सर्टिफिकेट्स, रिपोर्ट्स, अकाउंट्स, एवरीथिंग दे हैव. एट प्रेजेंट गोवा एसोसिएशन के पास 57 मेंबर्स है और 3 उन्होंने लास्ट क्वार्टर में ऐड किए हैं. आप सबको ये भी पता होगा कि हमने बहुत बढ़िया गोवा का GB एंजॉय किया था. कोई है जिसने किया नहीं था तो ताली बजाओ यार गोवा के लिए. गोवा का नाम निकलते तुम लोग अगर नहीं बोलोगे तो. और वेबा वडोदरा जो इस साल हमने एंटर की है एसोसिएशन, उनके पास प्रेजेंटली 104 मेंबर्स है, 104. वो न्यू मेंबर्स के लिए ट्राई कर रहे हैं. आई गेस वो जल्दी और अच्छे मेंबर्स लेके आ जाएंगे. गाइस मैं कुछ हाइलाइट्स देना चाहूँगा. एक स्लाइड बहुत बड़ी है, इसका चार्ट मेरे पास आगे है, शॉर्ट में बताऊँगा. इस साल हमने बहुत बढ़िया इवेंट वेस्ट जोन में किए हैं. आपको अगर पता होगा तो स्टार्टिंग ही हुआ था एरिया के GB के साथ में. उसके बाद में गांधीनगर में हमने GB करी. उसके बाद में हमने जो है गोवा GB करी. उसके बाद हमने IRE के सेशन चालू किए. जो पहला जो स्टार्ट किया था वो प्रॉप पुणे ने स्टार्ट किया था. उसके बाद में चंद्रेश भाई और उनके एरिया ग्रुप में जो स्टार्ट किया था वो इट वॉज बिग सक्सेस. रवि सर वहाँ पे थे, मैं अवेलेबल था. मोर देन 300 लोगों ने अटेंड किया था और 3 एसोसिएशंस थे वहाँ पे जिन्होंने वो अटेंड करके IRE का बेनिफिट लेना चाहा. एंड वडोदरा एसोसिएशन ने MCHI क्रेडाई के साथ में एक जॉइंट इवेंट लिया था. वहाँ पे भी मोर देन 300 मेंबर्स उन्होंने अटेंड किए थे. सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड. एक लास्ट में चार्ट दिखा देता हूँ कि वेस्ट जोन का करंट सिचुएशन क्या है. सो वी हैव 1911 मेंबर्स इन दी वेस्ट जोन. टारगेट मेरा था इस क्वार्टर के लिए 125, हम लोग टच किए 145. इट्स अ बिग सक्सेस गाइस फॉर वेस्ट जोन. मेंबर एसोसिएशन ग्रोथ एक्चुअली एक अभी इनलाइन है ड्यू टू वो पीरियड ऑफ लिमिटेशंस. 1 ईयर उनका क्लोज होने के लिए थोड़ा टाइम है, तो उसके बाद वो आ जाएगी. बिजनेस एक्सचेंज प्रोग्राम बहुत अच्छा हम लोग कर रहे हैं. 101 हमने इस बार टच कर दिए. टारगेट एक्चुअली हमारा 51 ही था. एजुकेशन ट्रेनिंग इवेंट हमने टारगेट किया था 3 एटलीस्ट इन क्वार्टर, लेकिन हमने 18 टच कर दिया. अगेन द बेंचमार्क. सोशल मीडिया कैंपेन डेफिनेटली अच्छा हो रहा है. हम लोग और अच्छा कर भी सकते हैं. वी हैव 98 पॉइंट्स रीच. अब ये 98 ऐसा है कि मेजर कितनी एसोसिएशन सोशल मीडिया पे अवेलेबल है उनको प्रमोट कर रही है. मैं नाम लेना चाहूँगा प्रॉप का, KDRA का, GAR का और ARA का. ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के लिए. मैं चाहूँगा बाकी लोग अगर कर सके तो बहुत अच्छा होगा. फंड रेजिंग भी अच्छा हम लोग कर रहे हैं. वी हैव डन द 10 इवेंट्स इन द लास्ट क्वार्टर. मेजर इवेंट्स हमारे 15 हुए हैं. CSR एक्टिविटी जो हमारे मेहुल भाई जो लीड कर रहे हैं, 14 हमने CSR एक्टिविटी कर ली सारे एसोसिएशन मिलके. गवर्नमेंट लाइसेंसिंग हमारे 10 नंबर से मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा चाहिए. कल भी रवि सर से मेरा बात हुआ था कि हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गवर्नमेंट ऑफिस के साथ में या फिर उनके डिपार्टमेंट के साथ में कोऑर्डिनेशन करना, हमारा पॉइंट वहाँ पे रखना. वी हैव रिच 10.
एफिलेशन विद क्रेडाई इस बार लास्ट क्वार्टर में गोवा ने करी है, तो हमारे पास 10 एसोसिएशन से वेस्ट जोन से जिन्होंने क्रेडाई के साथ में एफिलेशन किया है, और मैंने आज तक के 8 ऑडिट एसोसिएशन ऑडिट कर लिए हैं. सो दिस इज फ्रॉम द माई साइड. थैंक यू गाइज. हेलो अश्विन, जस्ट वेट देयर. रुक जाओ, उन्होंने 12 मिनट ले लिया है तो उनके लिए अभी और टाइम नहीं दे सकते. 3 मिनट की जगह 2 मिनट. अब बैठो. सिंपली आउटस्टैंडिंग इज द वर्ड फॉर आवर वेस्ट जोन डायरेक्टर. मैं आज मानता हूं. हेलो. एक टैगलाइन है, a lot can happen over coffee, and I'm glad, Ashwin, you and I had that coffee before the start of that term. So I think you've done a fantastic job, not just as a zonal director. The tagline for National Association of Realtors India, credible voice of realtors, he's got it patented for NAR India. He's taken a very active interest in the Maharera and been working with Ravi sir and all. And in general, I think Ashwin has set a milestone and a benchmark for what the zonal directors are supposed to do. So fabulous job, Ashwin. I want to say something. Dear GB members, I am very happy to announce that our RIC Mumbai has finalized one own office, purchased the office at Kandivali, Mumbai. And Superb. And a good healthy size, 300 square feet. So just I want to say this happy news by myself and Mehul bhai. So we didn't inform to the Ashwin Rasade ji. Thank you. Samir bhai, Thank you so much, Ashwin, and congratulations to. Vikas, just one sentence I want to add. On behalf of ARA, I would like to thank our Western Zone head, Ashwin Rasane, and entire leadership team to be present at Ahmedabad's Realtor Pro program, which was a huge success, and more than 1,200 realtors have attended that grand event at BAPS. Hello. Great, sir, great. Hello. Thank you. Sir, 1 minute. Sir. One question. Managing 60% of the NAR India. Superb job. Okay, thank you. So One second. we have left out with an agenda. Mr. 1 minute. I have to say something for the smart. What we have done something new for the Boss, I will sincerely request. That's why I was telling you, Pramod bhai, इसको ना थोड़ा later लेते हैं. अभी there is Sir, I'm not talking too much. Only इतने में खत्म कर दूंगा मैं. We got two honorary. I'm sorry. In a GB, please don't. अभी प्रमोद जी बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद I request everybody, please send a slip to the secretary. We cannot bypass agendas like this. There is a lot waiting. नहीं, there is a builder waiting outside. अभी उनकी भी presentation हमने बीच में adjust करानी है. No, it's just to adding to our reports. Finish this. So we given a 2 honorary membership to Mr. Gautam Chatterjee, founder, ex-Maharera member, and also we given a honorary membership to Mr. Niranjan Hiranandani. We are planning to give 3 more honorary membership, the person from legal, person from finance, person from social activities. So we are giving more to more people. So at the time of required event, they can present us. We can take the guidance from them. So we are planning to give more honorary member. Thank you, dear. Thanks. Honestly, it deserves a big round of applause because these 2 honorary memberships are again a benchmark set by SMART. Very, very well done. Thank you.
So we have left out agenda number 16, quarterly financial reports presentation by the Treasury. I will just request our Treasurer, Mr. Nishit Shah, and Joint Treasurer Chetan Chopla ji to give the presentation of the report. Your finance. Sir, you are not audible, sir. Nishit sir. Yes. No, it's okay. अच्छा भाई साहब मैं चाहता हूँ आप बोलो अरे आप तो बोलो ये थोड़ा उल्टा हो गया आप इस तरफ कौन सा देख कर पढ़ना पाए थोड़ा zooming करवाओ निशित भाई. It's not visible from here. हाँ थोड़ा जूम कर लो इसे ठीक है Great. सिंपल दो तीन लाइन में कंप्लीट करता हूँ ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा लास्ट ईयर अवर टोटल बैलेंस वाज 1,57,91,875 वी स्टूड दिस ईयर वी हैव ड्रॉप ड्यू टू द मेजर एक्सपेंसेस आई विल कम टू द सब्जेक्ट टिल 31st of January our total balance stands at 1,13,60,707. Our fixed asset has slight decline from 43 lakhs to 38 lakhs. Loans and advances, we don't have a major change. We have 9,17,000. That is compared to the previous year of 5,28,000. Our cash and bank balances are 64,76,000 compared to the year previous of 1,08 lakh. And sundry debtors stands at 92,200 compared to the 90,000 the previous year. Next slide, please. This is our income and expenditures. So this is where उसको थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा थोड़ा नीचे का पोर्शन जो है ना हाँ बस ये अभी रखो एक मिनट फिर मैं बताता हूँ थोड़ा ऊपर ले लेना बाद में हमारा जो लास्ट ईयर का जो एक्सपेंस लास्ट ईयर का जो इनकम था ऑन द राइट साइड आई एम प्रेजेंटिंग आई हैव द figure with me. We will drop down to the screen later. Our last year's collection was somewhere around 86 lakhs 58,000 and this year we are standing at 77 lakh 13,000. So we have a less income compared to the previous year and major expenditures. But the reason here we had major collections for the directory payments last year. So directory advertisements, those, first of all, the congratulations to all the members, those who have supported the directory initiative. They have given the advertisement for the directories and brought the sponsorship. Because of what we have able to receive around a major income of 45,60,000 rupees previous year. And besides that, so similarly the reciprocal effect in this year, we have to pay the agencies, those who have worked for the same. So we made a huge payments to them. So that is the reason it seems a drop into the income this year. However, the membership income has increased from the previous year, which was 30,81,000, and this year it is 33,98,500. So close to, as per my reading, it is around 13% approximate rise into the membership fees. So that is a good thing. I will again address this point in 2 minutes, but let me just complete through my presentation. Directory advertisement, as I mentioned, donations, we don't have any income. Fixed deposit, we don't have any income on this one. We have the interest income of 2,56,000 till now compared to the 3,62,000 the year previous. Share of profit from none of the associations during this year have received because of the absence of the activities in the early COVID wave of the last year. Sponsorship incomes, we have closed around 7,50,000. So as I said, this is our total stance. Our excess of expenditure over income, which is 31 lakh rupees this year. So we will be showing or booking the loss into the account this year. So as I said, we have made a huge payment this year because we had a significant receipt last year, which will be reflecting into this current year's book. So that will be coming to the next year's as well. हाँ मैं स्लाइड करता हूँ नीचे थोड़ा ऊपर कर दो ना भैया मैं हट जाऊँ बीच में से महेश भैया दिख रहा है ठीक है ओके सो our income of expenditure over expenditures last year was 26 lakhs rupees.
But this year we have a loss into the account. So which is around 31 lakh rupees comparatively. So it is on the books, I would rather say, in a simple language, the loss is not actually there. But yes, we have to present the accounts as and where an actual basis. So that is the method that we have adopted. On that count, last year we have made the profit and we have made, we have also deposited the income tax according to the same. However, we will be carry forwarding the loss for the next year and we will be adjusting against the profit we will be making into the next years. So it will be, a, I think accounting practice, Mahesh, we will be able to adjust. Yes, we are. See, basically, we are not able to judge the income, expenditures what we are going to incur. So, as per, we don't have a consistent income. There is only one single income which is consistent, which is a membership income. And we are taking in account all the expenditures that we are making. See, basically, it is the actual basis, sir. So, what happens is last year during the membership directory initiative, we had one significant event that because of the COVID restrictions and everything, the material prices has gone up and which has shoot up around 1.5 times. So we have to adjust because we have given the commitments to the sponsors and advertisers and everybody. Again, the logistic and cargo expenses and everything has increased because we make sure that all the 3,000 directories should reach to all the associations at their doorsteps. So we deliver that to the major of the associations into their doorsteps and they're distributed amongst them. No, Nishit, मेरा क्वेश्चन वो नहीं है. मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 30 लाख रुपए का लॉस आ रहा है, ये कहाँ से मेकअप होगा? माने ये जो पेमेंट किए हो आप, ये कहाँ से पेमेंट किए हो? यदि लॉस आया तो we have balances ना, we have our balances ना. कैश और बैंक बैलेंस है. Cash and bank balance, yes, that is right. Cash and of course we have the provision of the balances. FD नहीं तोड़े हो ना कोई? नहीं FD नहीं तोड़े. कितना रुपए का FD है अभी? That is 64 lakhs के आसपास है. और इस साल जो डायरेक्टरी की पेमेंट्स लास्ट ईयर हमने कलेक्ट करी थी इसलिए प्रॉफिट अच्छा था. इस साल हमने जो डायरेक्टरीज प्रिंट होके गई हैं उसके वेंडर की पेमेंट करी है, मेजर एक्सपेंडिचर वो है. चेतन, अंडरस्टूड. एक चीज और, आई थिंक यू आर गोइंग टू रिसीव अनदर 5 some lakh rupees जो आपने रिसीव करा है फ्रॉम दिस, वो भी इसी ईयर में अकाउंट होगा ना? हाँ जी, यू हैव टू करेक्ट इट. 6 लाख रुपीस फ्रॉम द 31st मार्च. So इसी एक एसोसिएशन से कंट्रीब्यूशन आया इवेंट से. There are couple of the more contribution will come probably till the end of the. चेक भी मिला ना. So hopefully I think loss कम हो जाएगा. हाँ जी. ये अकाउंट्स 31st जनवरी तक है. 31st January, that's what I was. I was coming to that point. Of course, I was coming to that point only. In fact, I was. मेरे हिसाब से पहले अपना कोई लॉस का बैलेंस शीट गया नहीं है कभी. नहीं गया सर. आज इतने सालों, मैं तो 6-7 साल से आ रहा हूँ जीबी में, तो कभी भी लॉस का बैलेंस शीट नहीं गया अपना. नहीं गया. ये हो सकता है पहली बार अपना लॉस का बैलेंस शीट जाएगा. इसमें 2 पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा आपको, जस्ट एड्रेस करता हूँ 2 पॉइंट. एक तो अपना सोसाइटीज, कर्नाटका सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट से ट्रांसफर हो रहा है सेक्शन 8 में, तो नेक्स्ट ईयर अपना जो बैलेंस शीट जाएगा वो सेक्शन 8 के हिसाब से जाएगा. ये पॉइंट नंबर 1. सो देयर माइट बी स्कूटनी केसेस. ये स्कूटनी केसेस में आएगा बिकॉज एक तो अपने कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर रहे हैं अपने लोग, और दूसरा अपने लॉस का बैलेंस शीट दिखा रहे हैं. महेश भाई, 2 मेजर पॉइंट्स है. इसको कैसे एड्रेस? सॉरी आपको काट रहा हूँ, माफी देना. एक्चुअल में लॉस नहीं है, ये कैश लॉस है. सर चेतन भाई, बुक पे आएगा ना सर. बुक्स इज बुक्स. सी, पहला बात तो ये है, आपने ये जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की है ये एक तरह से गलत है. Accounting has to be made as per the accounting standard. Sir, there are unforeseen circumstances we never anticipated. Please try to understand, because we cannot make the provision. Provision you can do for the planned expenditure. If there is an unplanned events, how can you judge and make a provision? So that was the problem with the previous treasurer team as well, and with us in the coordination as well. So what happens in Mumbai AGM last year, we took the charge, but at that time we had a COVID restrictions, or we had a limitations of the events. Post that, in first 6 months we didn't have major activities where we try to rectify this directory activities. And whatever the payment we have received was already in the last year. We were supposed to deliver and make the payment to the agencies in this year. Just निश्चित ऐसा है, मैं समझ गया आप कैश बेसिस में अकाउंटिंग किए हो, एक्रूअल बेसिस में नहीं किए हो. बट द प्रॉब्लम क्या आएगा नेक्स्ट ईयर, जब शिफ्ट ऑफ कोऑपरेटिव से आपका शिफ्ट हो जाएगा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन से आपका सेक्शन 8 के अंदर में, ये एक इशू प्लस लॉस का बैलेंस शीट, ये 2 इशू आएंगे. स्कूटनी केसेस माइट कम. Yes. इनकम टैक्स नोटिसेस एंड स्कूटनी केसेस माइट कम. We have to be prepared. I think, but अभी ऑडिटर कौन है अपने दिल्ली वाले हैं? Same, Sunil Arora. Same.
Mahesh bhai, So I have discussed this with Tarun bhai as well. If I can Mahesh add to bhai. it, the reason it will not come is because when we shift to Section 8, we'll have to bring it to zero account in any case. We'll have to clear all creditors and debtors. No, it's not about No, it is not creditors or not about- debtors. it is about books. All the assets and liabilities will automatically come down to that balance sheet. It will get it shifted. Mahesh bhai, one more point is there. We can't ask them about this because they have inherited the accounts previously followed. We should make a point that in future accrual basis pe ho, not on this basis. Nishit can't be asked on that question because last year mein provision kara hota to ho jata. Unfortunately, unseen growth hai in expenses, so they can't be a question on that. But we'll have to face scrutiny, so be it. क्या कर सकते हैं? Sir, simple way में मैं इतना बताऊंगा ना, whatever the initiative we takes in the larger spirits of the members. So if there is something plus minus happens, then we have to stand with the members and go with the practices. If we have to face the compliances part, we should face खाली it. एक ही प्रॉब्लम आने वाला मैं बता देता हूँ. अपने यहाँ पे मैट एप्लीकेबल हो जाएगा. लॉस का बैलेंस शीट अपने दे रहे हैं. हाँ. मैट एप्लीकेबल हो जाएगा. मिनिमम अल्टरनेट टैक्स जो होता है वो एप्लीकेबल हो जाएगा. बिकॉज सेक्शन 8 में अपने इसको मर्ज कन्वर्ट किया है. बट आई थिंक ये मैंने तरुण भाई से भी बात किया है. सो वी विल डिस्कस विद द ऑडिटर्स एंड कम बैक टू द सेम पॉइंट अगेन. राइट, हो जाएगा ना. यू कैन सेट ऑफ फॉर द नेक्स्ट 2 years 3 years. सॉरी, it's almost I'm through with this. So there are schedules forming part. Next slide, please. Next slide. So sorry, just hold on a moment. Hold on a moment. Can you come back onto the previous slide? Previous. Zoom in, please. So as I mentioned, the major expense is besides the agency payments, if you see, then there are no significant rise in any other expenses. Only couple of the activities that we took, which is a PR activity, and that has incurred some expenses compared to the previous year, which is a rise of around 5-10%, nothing but. So our salary expenses, our travel expenses, our gift and what we can say software expenses, our Zoom and online platform portal charges and everything more or less are in accordance. What we were paying previous, we are significantly on the similar grounds. So just because of one major event, I think there is a little change in the graph. समीर भाई, मैं रिक्वेस्ट करूंगा नेक्स्ट जो भी टीम आएगी कि जैसे अपने लोग लास्ट ईयर का फिगर दिखा रहे हैं, इस ईयर का फिगर दिखा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम से ऐसा हो कि फर्स्ट जीबी के अंदर में ही अपना बजट अप्रूव हो जाए कि साल भर का ये हेड के अंदर में इतना पैसा अपने को खर्चा होना है. Sir, I was coming to that point only. फ्यूचर लाइबिलिटीज कभी भी हो, मार्च एंडिंग में अपने लाइबिलिटीज क्रिएट कर पाए, प्रोविजन फॉर लाइबिलिटीज क्रिएट कर पाए. तो एक बजट होना बहुत जरूरी है. अदरवाइज इसमें बजट कुछ नहीं है. जब जो खर्चा हुआ वो खर्चा मान दिया चीज में. तो एक बार बजट बन जाए तो वो बजट के हिसाब से और बजट अप्रूव्ड हो जाए जीबी में कि भाई ये हेड के अंदर में ये खर्चा अपने को करने का है. अप्रूवल होने के बाद के अंदर में उसका अकाउंटिंग के अंदर में आए और साइड में कॉलम बजट का लिखा रहे कि इस हेड के लिए इतना रुपया बजट पास हुआ था. सर मेरा सिंपल सा पॉइंट है सर, लेट मी आंसर समीर भैया प्लीज. इसमें महेश भाई, दिस इज प्रैक्टिकली वेरी डिफिकल्ट. आई थिंक आई रिक्वेस्ट द बोर्ड टू कम ऑन टू दिस. एंटायर जीबी शुड कम इनटू अकॉर्डेंस. वी शुड हैव अ प्रोसेस, नॉट कीपिंग 1 year in mind. Whoever the treasury or the leadership takes the role and responsibilities, they should have a compiled vision of 5 years at least. तो पता चलेगा, क्योंकि हमको ये पता नहीं है. मेंबरशिप फीस टाइम से नहीं आती है. द ट्रेजरी कीप रिक्वेस्टिंग द पेमेंट्स फॉर द 3 to 6 months ऑफ द टाइम ऑफ द टेन्योर. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हर चीज के मिन्नतें करते हैं और उसमें दूसरे जो इनिशिएटिव्स लीडरशिप टीम लेती है तो बोले हम कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे, हमें एनएलएनडी की विजिबिलिटी बनानी है, सोशल मीडिया करना है, कैंपेन करना है, पेमेंट करना है, एजेंसीज डालनी है. सो दिस इज अ catch-22 सिचुएशन. हमको इससे फीस मेजरली सबके आगे है. I think there is 1 or 2 associations. I think, but I have to check exactly. I'm not prepared for that subject actually. The idea is, the larger picture I wanted to address here is, we must be having a roadmap for at least 3 to 5 years for the financial fitness. Whatever the organizations we are running, we must be clear. Unless the financial fitness, we are all talking, just coming, negotiating, discussing, presenting, and saying tata goodbye. That's it. So without that, I think it is a rise we should think about. Thank you.
So, shall I go through the sundry debtors and the creditors, the rest of the 2 slides, or I think I have covered major? Yes, please, Samir Bhaiya. Nishit, I will like to say something here. I'm glad Chairman Sir is here. Vice Chairman Sir is also here, so perfect time. Perfect time. हाँ नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ I'm glad they are there because of what we are going to talk. So first of all, absolute fabulous job done by Nishit and Chetan. They've been absolutely fantastic. So let's give them a big round of applause. Of course, Tarun Bhai keeps helping wherever required. And our secretariat team has also been efficient. Where is Jyoti? Okay, Jyoti also deserves it because she manages a lot of payments along with Ekta. Yes. But the reason I stood up is a little different. So Mahesh Bhai, your queries. Matter of fact is, Nishit Bhai has badgered me already saying we must introduce the budget from next year from the first meeting itself. So exactly what you have said, Nishit has actually said that to me on phone at least 3 or 4 times. And I would request the incoming teams, Shiva is not there, but I'm sure some of the people will be a part of the incoming team that's going to be coming in. So it's a request that we do that. I also thought I will touch one more point. You know, picking up best practices from within our associations, from outside our associations, from organizations like NAR. Tarun Bhai and I have been shouting hoarse for last 2 years that until unless, you know, the 2 major goals of the organization should really be membership growth, as Ravi sir keeps saying, and second should be funding. You know, the financial growth of the organization. The richer we are as an organization, the bigger we can grow. You know, if you look at NAR US statistics and the numbers that they talk of is Herculean. Please imagine, in the month of May, the Senate and the senators give them a time for NAR representatives to come, and it's like a 3-day council meetings that happen. Imagine ministers giving that kind of a time to an association of realtors. Because of the political advocacy, because of what they create. Now, you know, whether we talk webinars, whether we talk emailer campaigns, actually a lot of us used to get stuck. I will use the word used to get stuck. Let's get sponsorship from developer. हमारी पूरी thought process वहाँ खत्म हो जाता था. Now, if you see, there are commercial people, there are, companies like Strata and all are now coming in here at Coimbatore. They came to Bangalore. So these financial investment companies, the bankers, you know, the co-stakeholders, and there is a multiple interest in real estate. छोटे से लेके बड़ा, हमने न्यूज़लेटर्स क्रिएट कर दिए, हमने ईमेलर कैंपेन्स कर दिए, हमने व्हाट्सएप कर दिए. When I'm using हम, it's NAR India, तरुण भाई ने किए, हमने किए, चंद्रेश भाई ने किए. But point is, we now have enough opportunities. And really, let us become a world-class organization in the next 2 to 3 years where we don't have to worry what the expenses are, because our revenue should be much, much higher than what our expenses are. So let's make NAR India a very, very strong financial body. और उसके लिए, see, जैसे हम कन्वेंशन पे काम करने को आते हैं, तो काफ़ी लोग जाके इधर उधर से स्पॉन्सरशिप ले आते हैं. Now, if we are doing it all around the year, across associations, at a national level name, trust me, we will not even have issues of any kinds. हमको उल्टा आके बोलना चाहिए कि ये पैसा है, थोड़ा PR में और लगाओ, थोड़ा social media पे और लगाओ, you know, whichever teams are operating, because branding is an extremely important issue. And I think over the last 3-4 years, the branding has really gone up to the next levels, but it can go way, way far higher. And I think, which is where everybody will have to play a role in getting finances. आप मेरे से सच पूछो तो 47 associations that are a part of it. Nishit bhai, I am saying this for the incoming teams also. I had a thought process that everybody should be given a target at the beginning of the year
5 लाख रुपया लेके आओ, खाली 47 associations into 5 lakh rupiah, 2.4 crore rupee is standing at the balance sheet in 1 year in NAR India. That's the kind of power we have. Now obviously bigger associations can get 20, 30, 40, smaller associations will get 3, 5, 7, which is okay. But I think we should put targets in and we should ask everybody to get it. And trust me, every association that gets in money also makes money, and individually each association becomes richer. And it is very, very important for us to do that. So our financials of this organization have to go to the next level in next 2 to 3 years. I will, in my whatever present times are there, will work on some of these things over the next year or so in NAR India. That's a promise from my end. Thank you. Sameer sir, I would like to add something. Chetan here. I was having breakfast with Ravi sir, and he was just sharing the numbers, what we can achieve if we get serious about Maharera. Leave apart all these numbers. If we only focus in next 1 or 2 years upon Maharera training, I guarantee you will have 5 times balance what we have today. This is what I wanted to add. Chetan ji, we have decided to increase the NAR India fee to 1,500 Yes. plus GST. Yeah, that is there. That will is come there. this year, next And year. everybody has to implement that. I want you to remind everybody so that from... Yeah, I was coming to that point, sir. Absolutely, sir. That will You be- very well said. That will be covered. 1,500. 1,500. Yes, sir. Gentlemen, Afzal, Afzal, if you read the AGM agenda, it's a part of AGM approval later today evening. Because it's already been approved in the GB, it has to be ratified at the AGM. So yes, it's done. That's exactly I am saying, Samir. Probably you didn't get me. I said to repeat that and remind the members that it is there. Yeah, absolutely. It's already approved in the GB. It is approved. It's Yeah, approved so- in the last GB. Yeah, so we are taking it in an AGM approval also today. Yes. Thank you. Thank you. So I think I've covered major point has been discussed, nothing else. If you want me still to go through the sundry debtors and creditors, otherwise I'm fine. So thank you very much, the governing body members, and thank you very much for your work. Thank you, everyone. Thank you. I forgot to mention the unconditional support from Chetan bhai. So he has always been a gem of a person. And yes, and thank you, Sameer, for me barging you for the accounts every time and bothering you. But you've been wonderful leader. And unbelievable support from Jyoti, Ekta, and Tarun bhai as well from his office peoples, and wonderful support from the Delhi office staff as well. ये मेरा हमेशा का कहना है, the finance team, the treasury team is like the wicket keeper in the cricket. You know, if they catch in a 50-over match, if they catch all the balls the batsman misses, it's a part of their job and nobody appreciates it. They miss one ball and that becomes the highlight of the match. So thank you guys for doing a very fantastic job in the keeping. Thank you. समीर भाई, इस साल तो ठीक है, 90 लाख का बैलेंस शीट आप लॉस में कैश बैंक बैलेंस था क्रिएट कर लिए है. नेक्स्ट ईयर वुड बी चैलेंजिंग बिकॉज 90 लाख का बैलेंस शीट में 40-42 लाख रुपए अपने पास मेंबरशिप फीस आएगा. फीस बढ़ा भी देते तो 50 लाख रुपया होगा. फिर भी अपने पास में 40 लाख रुपए का डेफिसिट रहेगा. विच सीवा हैज टू मैनेज समहाउ विद सम स्पॉन्सरशिप्स. अदरवाइज अगेन द नेक्स्ट ईयर वुड बी अ लॉस बैलेंस शीट. कल 6.5 लाख का आया है, IWG का स्पॉन्सरशिप आया है. आते आते आई एम कॉन्फिडेंट वी विल कवर दैट. फाइन. Thank you, Nishit bhai and Chetan bhai, for the wonderful financial report presentation.